Hello friends, welcome back to Codera. In the previous video, we talked about the features of Java, and now in this video we will cover the topics like JDK, JRE and JVM. So let's get started. So first one is JDK or Java Development Kit. As its name suggests, it is a development kit. That means ये एक किट है जिसकी हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, उन्हें रन करवा सकते हैं। ये हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जेडीके के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज़ जेआरई एंड अनदर डेवलपमेंट टूल। द डेवलपमेंट टूल्स लाइक जो हमें चीज़ें जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है वो इन डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आती है, जिससे आपको कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, सम डॉक्यूमेंट जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन सी इन योर सिस्टम्स इनसाइड द program files in Java folder you will see there is a folder named JDK. If you open that folder you will see that there is a JRE and also a bin folder. Inside that folder you will find all these development tools like Java Doc, Java C, Java, all these are our development tool. Now we will see about our next topic, that is Java runtime environment, or you can write it as Java RTE. As its name tells us that it's an environment where we can run our program, but here we can't develop the program. For the development we have JDK where we have the different type of tools. बट अगर आप अपने प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं सो ये नेसेसरी है कि आपके सिस्टम में JRE होना चाहिए. सो इट्स ओनली फॉर देम हु ओनली वांट्स टू रन देयर प्रोग्राम, दैट इज़ the user of the system, and also it physically exists. As we have seen in the previous slides that there is a folder named JRE that exists. JRE has some components. First one is deployment technology like our plugins. Second one is user interface toolkits. It includes AWT, Swing, image IO processing. Third one is integration libraries, for example JDBC, RMI, and some other libraries are like Bean, Math Library, Networking for XMLs, and the next is Lang and Util based libraries. It includes our collection frameworks, concurrency, and the last one is JVM. Now we will see the basic of JVM or Java Virtual Machine. It is very important of both JDK and JRE. जब कभी भी हम किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले वो JVM में जाता है. उसके बाद JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे. दैट्स वाई it is also known as interpreter. But like JRE we can't see it as a folder in our system because it doesn't exist physically. Most of the people think that it is a hardware because its name is virtual machine, but it is a software. इसकी हेल्प से हम किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को भी हमारे सिस्टम पर रन करवा सकते हैं because it compiled those program and convert them into the Java bytecode. So JVM has three notions: specification, implementation and instance. First one is specification. It is a document where the working of Java virtual machine is specified. Second one is implementation. It is a computer program that meet those requirement of JVM specification, that is JRE. And the last is instance or runtime instance. Whenever
we run our Java class file, an instance of JVM is created. हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है JDK, जिसमें होते हैं कुछ डेवलपमेंट टूल्स और JRE के अंदर होती हैं कुछ जावा क्लासेस, लाइब्रेरीज और JVM. To conclude, we can say that JDK contains JRE and development tools, and JRE contains JVM and some library classes. If you like this video, so please like and subscribe, and I want your feedback, so please comment in the comment box and don't forget to share it. Thank you so much for watching.